Good morning, students. Hope you will be fine. After a long time, we will start again study. Now, you will in higher class. So, in the topic of chemistry, the first topic is some basic concept of chemistry. Today we will start this topic. As you know that CBSE reduced 30% syllabus. So according to the norms of the CBSE, we will study this chapter, chemistry. How we can define this branch? Chemistry means study of matter and its properties. Study of matter and its properties. That is chemistry. We have earlier discussed what are the contents in the topic. So, first is nature of matter. Nature of matter. Okay. Because as we know that chemistry is the study of matter and its properties. So, what is the nature of matter? What is matter? Anything which has mass occupy space. Anything which has mass and occupy space is called matter. Everything around us, for example, book, pen, pencil, water, air, all living beings, etc. are composed of matter. These are the example of matter. So chemistry is the science of molecules and their transformation. Chemistry क्या है? Molecule, science of molecule and their transformation. और हम उनको ट्रांसफॉर्म करते हैं उनके एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर. एंड इट इज द साइंस नॉट सो मच ऑफ द 100 एलिमेंट्स बट ऑफ द इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट मे बी पुल्ड फ्रॉम दैट. जो इनसे बने होते हैं उन्हीं एलिमेंट से मिलकर के बने होते हैं. रसायन विज्ञान केवल 100 जो आपके जानकारी में तत्व हैं उनका ही विज्ञान नहीं है, बल्कि उनके द्वारा कितने और दूसरे पदार्थ बनते हैं, दैट इज ये उनका विज्ञान. नाउ लेट्स सी इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री. Importance of chemistry. Chemistry plays a central role in science and is often intertwined with other branches of the science. यानी chemistry दूसरे जो विज्ञान की और शाखाएं हैं उनके द्वारा क्या है, जुड़ी हुई है. Chemistry provides methods for the isolation. क्या प्रोवाइड करता है कि हम उनको कैसे अलग कर सकते हैं of life saving drugs from natural source and makes possible synthesis of such drug. यानी कैसे हम उन ड्रग्स को बना सकते हैं, उनका आइसोलेशन कैसे कर सकते हैं, ये सब हम केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं. एंड केमिस्ट्री हैज हेल्प्ड in dealing with some of the
pressing aspects of environmental degradation with a fair degree of success. एनवायरमेंट के अंदर जो भी डिग्रेडेशन हो रहा है उसको भी हम केमिस्ट्री के अंदर ही स्टडी करते हैं. नाउ व्हाट आर द नेक्स्ट टॉपिक इज classification of matter. Basically, you have earlier read the classification of matter. Only I am reminding you matter. 9th class, you have earlier read that matter is classified into two. First one is pure substances and the second one is impure substances. Means those substances which consist of only one kind of particles are called pure substances, and in pure substances there are the two, that is element or compound. They are considered to be pure substances, whereas impure substances are also known as mixture. Those substances which consist of more than two substances are called mixture. Mixture are of two types. First one is homogeneous mixture and the second one is heterogeneous mixture. Those substances which consist of more than two particles are called impure substances, and they are also known as mixtures, and it is of two types, homogeneous as well as heterogeneous mixtures. Homogeneous, homo means same, means those substances which have uniform composition are called homogeneous mixtures. Just for example, sugar solution. Whereas those substances which have non-uniform composition are called heterogeneous mixture. The example is sand plus water or blood. Heterogeneous substances को हमने दो भागों के अंदर स्टडी किया. फर्स्ट वन इज सस्पेंशन एंड सेकंड वन इज प्रोडक्ट्स. और यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है? ट्रू सॉल्यूशन. And elements basically divided into three, that is metal, non-metal and metallics. And compounds are of two types, inorganic compound as well as organic compound. So this one is the brief introduction of the classification of matter. ये सब हम 9th क्लास में पढ़ते हुए पीछे से आ रहे हैं, तो इसमें कोई नई चीज नहीं है. यहाँ पर इंटर कन्वर्जन भी आपने पढ़ा था कि सॉलिड, देयर आर द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर: सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैस. तो यहाँ मैं इनका इंटर कन्वर्जन भी आपको बता दूं कैसे हम इनको इंटर कन्वर्ट एक दूसरे में कर सकते हैं. Only these are the general things which are very important in the aspects of this subject. ये सब जनरल चीजें हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए. सॉलिड, सॉलिड को हमें किसके अंदर कन्वर्ट करना है? लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करना है. और लिक्विड को
मेल्ट करना है, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग। सॉलिड को हमें लिक्विड के अंदर चेंज करना है, तो क्या करेंगे, मेल्टिंग। लिक्विड को गैस में चेंज करना है, तो इवेपोरेशन। एंड वापस लिक्विड को सॉलिड में चेंज करना है, तो फ्रीजिंग। Whereas गैस को लिक्विड में, यह क्या आपका इवेपोरेशन, यहाँ है इवेपोरेशन। गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, दैट इज कंडेंसेशन। एंड सॉलिड से डायरेक्ट गैस, दैट इज sublimation। Whereas गैस को यदि हम वापस सॉलिड के अंदर चेंज करना चाहते हैं, तो दैट इज डिपोजिशन, इज कॉल्ड डिपोजिशन। So this one is the interconversion of the states of matter. Now let's see how we can represent atoms as well as molecule, means a representation of atoms. And molecules. Simply we can represent the similar atoms such as hydrogen, and that is the symbol of hydrogen which was developed by the Archimedes. Hydrogen, so it means this is an element and only it consists of hydrogen particle, whereas this one is oxygen, whereas this one is nitrogen, whereas this one is fluorine, whereas this one is chlorine. These are the representation of different atoms. Similarly, copper, sodium, this one is the representation of the atoms. We can represent the atoms by their symbol. Whereas how we can define, suppose that hydrogen और hydrogen we combine करते हैं, क्या बनाएंगे, they united to each other to form a molecule of hydrogen. Means you can represent by this way or by this. Similarly, chlorine combines with fluorine when two atoms unite to each other to form molecules. Means एटम से मिलकर के क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है जी, there is one atom of hydrogen mixed with one atom of hydrogen to form one molecule, and atom and molecule are the constituent particle of matter. So let's see what is atom. डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में आपने पढ़ा था, डाल्टन ने एटम को इनडिविजिबल पार्टिकल बनाया। ठीक है, सो एटम क्या होता है, एटम स्मॉलेस्ट नेचुरल न्यूट्रल पार्टिकल्स ऑफ मैटर which is unique to an element and shows all its characteristics. It may or may not have a free existence. ये फ्री स्टेट में भी पाया जा सकता है और फ्री स्टेट में नहीं भी पाया जा सकता है। क्या है, स्मॉलेस्ट न्यूट्रल, स्मॉलेस्ट न्यूट्रल नेचुरल पार्टिकल। ठीक है जी, सिमिलरली व्हाट इज मॉलिक्यूल,
मिलकर के क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल बनते हैं। दैट इज स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ मैटर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। क्या रखता है, अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखता है अंडर नॉर्मल कंडीशंस। व्हाट आर द नॉर्मल कंडीशंस? दिस इज 1 atmospheric pressure and 298 Kelvin. For example, carbon, that is sodium chloride, silicon, that is SiO2 formula, silicon dioxide, they form covalent network, and these are the inorganic compounds, whereas organic compounds and all gases and liquids except mercury are in molecular form. They are in molecular form. So this is about the atoms and molecules. Let's see. After the discovery of electron, proton and neutron, it means when we have an idea about the matter that it is a divisible particle, यानी एटम जो है वो बहुत अधिक पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। इसके अंदर क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, लेकिन कितने हैं? दिस वन इज द क्वेश्चन फॉर दैट। देयर आर more than 51 subatomic particles in the atom, except these are the main neutron, proton and electron. So अगर हम एक एटम को देखें तो एटम दो भागों से मिलकर के बना हुआ है। दैट इज जो एक उसका क्या बनाता है, न्यूक्लियस वाला भाग बनाता है, उसका एक्स्ट्रा न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन्स होते हैं। पहला पार्ट है उसका न्यूक्लियस और दूसरा है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियस में क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन्स होते हैं। इट मींस समेशन ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इज कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के सम को, द सम ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इज आल्सो नोन एज मास नंबर, व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल A, whereas total number of proton that indicates the atomic number. It means किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो किसको, एटॉमिक नंबर को इंडिकेट करते हैं, और दैट विल बी इक्वल टू Z। ठीक है जी। नाउ सेकंड वन इज द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर चार्ज। अगर आप एटम को देखें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके न्यूक्लियस के अंदर हो गए, और इलेक्ट्रॉन जो है वो सराउंडिंग नेचर के अंदर है, उसके आउटर वाले पार्ट में, जिसको हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, which contains electron. That clear? How we can represent an atom? Suppose that we have a letter J. मैंने J ऐसे लिया है। पूरी केमिस्ट्री के अंदर यही एक ऐसा लेटर है जिसको, जो किसी एलिमेंट को शो नहीं करता। J, तो J के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर की तरफ हम एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करते हैं, और नीचे एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। राइट में टॉप पर फॉर्मल चार्ज और चार्ज को इंडिकेट करते हैं, और नीचे किसको इंडिकेट करते हैं, एटॉमिसिटी को इंडिकेट करते हैं। अब मैं इसको एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं। सपोज दैट वी हैव एक ऑक्सीजन 16 O2 and plus. It means the atomic mass of oxygen is 16A and the atomic number of oxygen is 8. The atomicity of oxygen is 2, whereas the formal charge is +2. This one is the representation of an element. Properties of atoms. Since in neutral atom the number of proton is equal to the number of electron, hence
the atomic number becomes equal to the number of electron. This is the unique property of atom. So students, आज की वीडियो में केवल इतना ही. नेक्स्ट में जो हम आगे पढ़ेंगे मैं आपको बता देता हूँ. आप सब ने बुक परचेज कर ली होगी. जो बुक है उसमें अपना जो टॉपिक आगे आएगा दैट इज एटॉमिक एज वेल एज मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मास. क्लियर? ठीक है. उसके बाद फिर परसेंटेज कंपोजिशन है, एम्पेरिकल फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, सम केमिकल रिएक्शंस एंड देयर स्टोइकियोमेट्री and calculations based on the stoichiometry. This one is the syllabus of your first topic. This one is the elementary idea about the atoms and molecules and the generally matter. Matter के बारे में आज ही हमने डिस्कस किया है. Don't forget the ATPs in the form of like. अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें. थैंक यू वेरी मच. हैव ए नाइस डे.